अब बात करते हैं एक ऐसे गिरोह की जिसने भिक्षा मांगने की आड़ में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। दाहोद में भिक्षा मांगने के बहाने 5 लाख रुपए की चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दाहोद पुलिस ने इस गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। पुलिस ने चोरी किए गए 5 लाख रुपए नगद सहित कुल 6 लाख रुपए का माल जब्त किया है और आगे की जांच शुरू की है। ये पूरा मामला दाहोद अनाज मार्केट का है, जहां पर 29 अक्टूबर को 6 महिलाएं अनाज मार्केट स्थित एक व्यापारी की ऑफिस में घुसी थी। भिक्षा मांगने के बहाने उन्होंने व्यापारी की नज़र बचाकर दराज में रखे 5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गई। व्यापारी ने तुरंत ही दाहोद टाउन ए डिवीज़न पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और शहर में लगे कैमरों की जांच से पता चला कि आरोपी सफ़ेद रंग की टाटा सफारी कार में सवार थे और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की ओर भाग गए। टेक्निकल सर्वेलेंस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी इंदौर से वापस दाहोद की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित खंगेला चेकपोस्ट पर नाकाबंदी की गई। जैसे ही कार वहां पर पहुंची, पुलिस ने घेराबंदी कर 7 आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अनाज मार्केट में चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने अंकलेश्वर जीआईडीसी में भी चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया था। उसकी शिकायत भी वहां पर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने चोरी के 5 लाख रुपए नगद और 1 लाख रुपए की टाटा सफारी समेत कुल 6 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जाँच कर रही है। જી સર ગઈ 29/10/25ના રોજ દાહોદ એપીએમસી માર્કેટની એક ઓફિસમાં 5 લાખ રૂપિયાની ચોરી થયેલી હતી, જેની એફઆઈઆર એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલ હતી। આ ફરિયાદ દાખલ થયા પછી ડિવિઝન ડીવાયએસપી શ્રી ભંડારી સાહેબ તથા દાહોદ એસપી શ્રી રવિરાજસિંહ જાડેજા સાહેબ ની સૂચનાથી એલસીબીની એક ટીમ બનાવવામાં આવેલી અને સ્થાનિક પીઆઈ એ ડિવિઝનની એક ટીમો અલગ અલગ બનાવવામાં આવેલી હતી અને આ ગુનો ડિટેક્ટ કરવા માટે અલગ અલગ કામગીરી સોંપવામાં આવેલી હતી, જેના આધારે દાહોદ નગરમાં અલગ અલગ સીસીટીવી જે ખાનગી લાગેલા છે તે તથા દાહોદ પોલીસના નેત્રમની હેઠળના જે કેમેરા આવેલા છે તે બધા સર્ચ કરવામાં આવેલા। એનાથી એક ખાનગી વાહન ટાટા સફેદ કલરનું વાહન જાણવા મળેલું ને તેમાં 6-7 આરોપીઓ જતા શંકાસ્પદ જોવા મળેલા। આના આધારે હ્યુમન સોર્સિસ અને ટેકનોલોજીની મદદથી અમે સર્વેલન્સ કરીને એલસીબીની ટીમો અને એ ડિવિઝનની અલગ અલગ ટીમો એની પાછળ લાગેલી હતી। જાણવા મળેલું કે આ લોકો ઇન્દોર તરફ ગયેલા હતા અને હ્યુમન સોર્સિસની મદદથી જાણવા મળેલ કે લોકો પરત ઇન્દોરથી દાહોદ અમદાવાદ તરફ આવી રહેલા છે। તો ખંગેલા ચેકપોસ્ટ દાહોદની સીમા ઉપર આવેલી છે, ત્યાં અમે નાકાબંધીમાં હતા। આ દરમિયાન આ વાહન શંકાસ્પદ જે જણાતું હતું એ મળી આવેલ અને એ અમે પકડી લીધેલું વાહન। એમાં 7 જેટલા આરોપીઓ મળી આવેલા। સીસીટીવી અને આ આરોપીઓને મેચ કરતાં આ જ આરોપીઓએ આ ગુનો કર્યા હોવાનું ફલિત થતાં વધુ પૂછપરછ કરતાં આ જ લોકોએ આ ગુનો આચર્યા હોવાનું ફલિત થયેલું અને તેઓ પાસેથી ચોરીમાં ગયેલા તમામ મુદ્દામાલના 5 લાખ રૂપિયા તથા વાહન અને મોબાઈલ કબજે કરવામાં આવેલું છે। તમામ આરોપીઓને अटक કરવામાં આવ્યા છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।